एडवाइस के लिए थी। उसके बाद निर्णय कुछ भी ले सकता था प्रेसिडेंट, और इसका उपयोग जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने किया भी, कि उन्होंने कभी कभी जो उनके पास आते थे विधेयक उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में आके सन 76 में, सॉरी जी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि दृश्य जो है और वो तमाम दर्शक के दृश्य देख भी रहे हैं, इसलिए इसके बारे में भी लगातार बताते रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही पल पहले अपने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की है और उसी की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। सबसे पहले मतदान करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल रहे। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट दे चुके हैं। जी अग्निहोत्री जी, जी आप शक्तियों के बारे में बता रहे थे। शक्तियां काफी दी गई हैं। पहले तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को वो समन करता है, प्रोरोग करता है। जो भी विधेयक पास होते हैं पार्लियामेंट में उनको वो स्वीकृति देता है, एसेंट करता है। तो एक तो ये है। देन कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, और इसके अलावा कुछ और भी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, पावर टू पार्डन है, इस तरह की तमाम उनको पावर दी गई हैं। लेकिन बीच में कुछ उन पर अंकुश लगा था, और वो ये था कि जो प्रेसिडेंट है ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एब्सोल्युटली, इन फैक्ट यू कैन आल्सो सी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एंटरिंग द वेन्यू। He will exercise, his vote shortly. Just a few minutes ago, you saw the Prime Minister casting his vote to elect the President, and now the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, walking in. राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है और लंबी कतारें तमाम सांसदों की हम देख रहे हैं। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग कर चुके हैं और अभी हमने तस्वीरों में तमाम हम देख रहे हैं तमाम सांसद, तमाम मंत्री, तमाम पूर्व मंत्री इस समय कतारों में और अपनी बारी का इंतजार करते हमें दिखाई दे रहे हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए आज वोटिंग हो रही है। 21 जुलाई को नतीजे हम सबके सामने होंगे और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण नए राष्ट्रपति का होना तय माना जा रहा है। So you were talking about, when some of the powers of the president were curtailed. If you could, take us back in history and cite some examples of when we've witnessed that kind of a stormy relationship between the president and the prime minister of the country. There was a dilution, not curtailment, but dilution. In the sense that, as I said, originally the Constitution said, Article 74, that the president will act on the aid, and there shall be a council of ministers to act. To advise the president in terms of whatever powers has been given to him. But in 1976, the Constitution was amended to say that he shall act only as per the advice of the Council of Ministers. Then again, this was reconsidered, and in 1978, when the government changed, then they said that he can, after the whatever advice he gets from the Council of Ministers, he can return it back for reconsideration, either to Parliament or to the Council of Ministers. But if this same advice is given again, then he has to accept. So that is how it is. But still he has, as I mentioned, a lot of powers. As a matter of fact, he is the head of the Parliament. And that is where he summons the Parliament, he prorogues the Parliament, he passes, gives his assent to all the bills passed by the Parliament. He can send back, as I said, a bill which is sent for assent for reconsideration by the Parliament. So he has considerable powers, and it all depends on the personality of the President as to where he should exercise his discretion and where he should go by the
advice of the popularly elected government. Absolutely. And, if we compare 2 decades, ago, Mr. Rakesh, now we see the office of the president, more open, more engaging with the audience as well. So, the massive presence on different social media platforms, the various tours and trips that the president now undertakes and which is widely covered. So that, the effort to actually, give out that message of engagement with the larger, public. I would like to add what Agnihotri sir was saying, that the role of president becomes more important when we have a situation when there is some sort of political confrontation and there is no easy way out. Like when Mr. Narayanan was president of India, the Bihar government, the UP government, when BJP was in power, it was dismissed by the UPA government, the Congress government that time. So what happened that there was a lot of protest. Mr. Bajpayee sat on a dharna, and there was a lot of popular this public feeling that something wrong has happened to the state government. थोड़ा सा तस्वीरों के बारे में बता दें, क्योंकि तमाम जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वहां पर भी वोटिंग जारी है, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हमने कुछ ही पलों पहले देखा ये तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कुछ ही पलों पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट दिया है, और इसी की तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लखनऊ में वोट देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुमार राकेश। Yeah, so that time President returned the Union Cabinet recommendation for President rule in Uttar Pradesh, and it created an atmosphere that finally led to restoration of the center government withdrawing their recommendation, and the BJP government at the state returning to power once again. So President has a lot of role, but at a time when the ruling party at the center has a commanding majority, so I think the idea for President is to, as Mr. Agnihotri said, is to act on the advice of the cabinet, and if there is some issue where like some sort of confrontation is there, some sort of controversy involving opposition and the government is there, so he may use his personality, he may use his wisdom to guide the issue to rightful conclusion. But generally, he is not expected to, overrule the government. Absolutely. Mr. Suresh, at a time when we are talking about, the office of the president, the first citizen of the country, and the choice of candidate of both the NDA and the UPA, a lot of analysts have, expressed their opinions, saying that the opposition, in fact, looking at how several parties in the opposition camp have also rallied behind Draupadi Murmu, there should have been, a consensus candidate looking at the wider ramifications, the social messaging, that has gone across the country in the form of Draupadi Murmu being nominated. But at the same time, you have some parties who are, questioning the choice of candidates, saying, she's not fit to be a president because she doesn't speak much. So just yesterday, you heard, RJD leader Tejaswi Yadav say that she in fact, if elected, will be like a mere statue. And Yashwant Sinha himself, the other contestant, calling her a rubber stamp. So when we talk about the highest office, should such low level of political discourse be allowed, be acceptable in the country? Well, Tejaswi Yadav should be the last person to comment on these things, because his own father had nominated his housewife, homemaker mother as the chief minister of Bihar. Did they look into the qualification? Did they look into her speaking abilities? जी सुरेश जी, थोड़ा सा तस्वीरों के बारे में और बता दें, माफ कीजिएगा आपको फिर से रोकना पड़ रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भी कुछ ही पलों पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और नवीन पटनायक ने कुछ ही पलों पहले वोट दिया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। And as you can see, as we've been discussing, the pink slip is for the MLAs. You can see on your screens, the pink slip is with the MLAs, and the blue ones, correct me if I'm wrong, the green ones, Mr. Agnihotri asserts, the green ones for the members of parliament. So that is clearly visible on the screens as well. Mr. Suresh, please go ahead. So, this kind of, consensus is the ideal situation, but where is consensus left?
even on external affairs, matters of external affairs, matters related to defense. There used to be a consensus once upon a time. Today we have a very deeply polarized polity in this country today. So to expect any consensus at this point of time would be, being idealistic. I think that presidential election, there is a provision in the constitution for the same. And I think that it's okay to have a presidential election. But what I am, this entire, brouhaha of being an ideological, the way the opposition candidate has put it is, more of a joke, because, a lot of political parties which don't subscribe to NDA's point of view on many issues have decided to support. Because at the end of the day, yes, Mr. Agnihotri is right, the president has many discretionary powers, but the fact remains that the president is the symbol of the country. It's he or she symbolizes the unity, the sovereignty, the integrity of the country, and being the head of the supreme commander of the armed forces, being the head of the constitution. So it would be an ideal situation, yes, to have a consensus on this issue. But if it is not there, then also it's okay. But the fact is that it's not an ideological thing. It's a political election where, you are, everybody is garnering their strength. But this kind of derogatory and denigratory below the belt kind of remarks is unfortunate and uncalled for. This is not expected for the future president of India. I think that would be unfair, because at the end of the day, all of them will have to, deal with, because we have a constitution, we have this. That's why, to what level can we stoop? People boycotting dinners or invitations of the governors not being invited. To what extent we will go, this is something that we need to reflect as a nation when we are celebrating our 75th. These are about institutions at the end of the day. And when it comes to institutions, I think that let us have some decorum, some dignity. That's called for. Absolutely. In this important year of Azadi Ka Amrit Mahotsav, it's important that, the sanctity, the credibility of these democratic institutions are maintained and parties rise above these political discourses. And even if there's no consensus, even if there is a contest, it should be done democratically. And there is no need to, stoop low, especially when it comes to commenting and, defaming the potential candidates. बिल्कुल, और लगातार 10 बजे से वोटिंग जारी है और तमाम राज्यों की विधानसभाओं से भी जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होनी है और आपको बता दें कि सांसदों को जहां हरे रंग के मतपत्र दिए जा रहे हैं, वहीं विधायक जो हैं, यानी राज्यों की विधानसभाओं में जो विधायक वोट डाल रहे हैं, उन्हें गुलाबी रंग के मतपत्र मिल रहे हैं, जो खास बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति चुनाव में, इसलिए तमाम विधायक, तमाम सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी अपने स्वयं विवेक के आधार पर भी वोट कर सकते हैं। और कुमार राकेश, जैसे अभी सिंबल ऑफ द कंट्री के बारे में केजी सुरेश जी ने कहा कि कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है और इसी को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनका चुना जाना भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखता है। और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तो हमने ये बातें देखी ही, तमाम जो एनडीए के घटक दल नहीं हैं, जो एक तरह से विरोधी दल माने जाते हैं, उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन आम जन में, आम लोगों में जिस तरह से उनकी उम्मीदवारी को लिया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? जो पहले भी यहाँ पर डिस्कस हो चुका है कि आम जन में तो सबसे बड़ा मैसेज यही गया कि जो समाज का जो सबसे डिसएडवांटेज तबका है उसको वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं और उसको बस सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, उसके बीच में उन्होंने काम किया है। वो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से, जो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इस देश का, वहां से आई हैं और इनफैक्ट पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो वहां पर टीचर के रूप में काम करती थी और फ्री में एजुकेशन भी देती थी। तभी उनको नोटिस किया गया और तब वो पब्लिक लाइफ में आई, 2 बार एमएलए बनी, उड़ीसा में 1 बार मिनिस्टर भी बनी और उसके बाद जब बीजेपी सरकार यहां पर आई तो वो गवर्नर भी बनी और अब वो राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो ये है और इसी कारण हम देख रहे हैं कि ये एक मैसेज इतना बड़ा है कि अपोजिशन में भी जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हमेशा रहे हैं,
वो भी कहीं न कहीं एक मजबूरी रही है उनको सपोर्ट करने की। तो ये तो सबसे बड़ा ये मैसेज गया है। और absolutely, and as you can see on your TV screens, members of parliament lined up, in fact, to cast their vote to choose the next president of India. What's intriguing, Mr. Agnihotri, we've been watching these visuals coming in from the parliament, from various state assemblies as well. India is a shining example of how we conduct free, fair, smooth elections, the largest democracy with such a huge population, and very efficiently through the use of these EVMs. But when it comes to the election to the highest office, that of the president, we are still, using the ancient method of the ballot box, and of course it's all about secrecy, and also because of the fact that it's a different procedure, the single transferable vote system that we discussed earlier on in the program. But since this is one system that's largely not been applicable for quite a number of decades, as we've been discussed, is it time to move beyond and have a different kind of much more advanced, much more automated system in place to elect the president, which will be much more smooth and fast? As you rightly said, this is not the type of election as general election is there, because here they have to mark their preference. Absolutely. So that technology will need to be developed. That is first thing. Secondly, the number of persons who have to cast their vote is not very large. I mean, it is only about 700 or 800 if you add some of the MLAs in the Lok Sabha. I mean, here in Parliament, and similarly 400 or even smaller elsewhere. So no urgent or immediate need for use technology. And in any case, as you must have noticed, that this electronic voting system in India is in some sense quite unique, because in some advanced countries they are still having ballot yes. paper ballot papers, and in any case there is a lot of controversy surrounding the efficacy and secrecy and manageability of this electronic voting machine. Multiple rounds so of one has voting. to progress carefully, and therefore there may be some testing going on or something, but there is no urgent need felt for changing the system as far as presidential and vice presidential election is concerned. Absolutely. So, because it's a very, very different procedure from the general elections, it's important to understand that for just about 5,000, people who participate in these elections to elect the President of India, it's going to be a cumbersome procedure. Also, it's going to have some kind of financial implications as well to sort of reform the entire EVM procedure, because it's very, very unique and different from the EVMs which are used in the general elections. KG Suresh, हमने जाहिर तौर पर आज दोनों उम्मीदवारों को लेकर भी बात की है, और जाहिर तौर पर जो शक्तियां हैं, जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं संविधान के तहत, उन पर भी चर्चा करने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़ा पहलू, जैसे पहला टीना ने भी जिक्र किया था इस बात का, कि अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जनता के साथ किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, और खास तौर पे जिस तरह की विदेश यात्राएं हाल फिलहाल के सालों में हमने राष्ट्रपति की देखी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतीक हमारे देश की लोकतंत्र को लेकर दुनिया में लेकर जाता है। अब इस बार का राष्ट्रपति चुनाव और इसके बाद में राष्ट्रपति की भूमिका एक हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर बाकी देशों में किस तरह का संदेश जाता दिख रहा है दुनिया भर में से लेकर? नहीं, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। देखिए, जब ये संभव नहीं है प्रधानमंत्री के लिए कि वो पूरे दुनिया का जो है वो वैसे भी काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री के लिए यह संभव नहीं है कि पूरे विश्व भर में जो है वो भ्रमण करें। राष्ट्रपति भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के अस्मिता को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का जाना जो है, मैं समझता हूं कई मुल्कों में पहली बार राष्ट्रपति कोविंद भी गए। इजराइल उन मुल्कों में से था, और भी मुल्क हैं जहां पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति का जाना। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत मजबूत संदेश देता है कि क्योंकि वो भारत को, भारत के संविधान को, भारत के सेना को, सबको प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका जाने से वो एक होता है कूटनीतिक स्तर पर जो संबंध है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं कि पीपल टू पीपल रिलेशन। तो उस तरीके से वो जो संबंधों को जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, एक होता है हार्ड कोर डिप्लोमेसी और एक होता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इसको सॉफ्ट पावर भी कहते हैं।
राष्ट्रपति जब जाते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें हमारा सांस्कृतिक आयाम भी जुड़ता है, हमारे जो है साहित्यिक आयाम भी जुड़ते हैं, वो सभी पहलुओं पर जोर दिया जाता है जो शायद हार्ड कोर डिफेंस स्ट्रेटजी, वो विषय जब प्रधानमंत्री जाते हैं तब चर्चा होती है, और जब राष्ट्रपति जाते हैं तो वो जनता से जनता तक का जो एक संबंधों का पीपल टू पीपल रिलेशनशिप का जो महत्व दिया जाता है, वो जो है वो मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्रपति का जाना जो है, और हमारी राष्ट्रपति जो भविष्य की जो राष्ट्रपति होंगी, वो भारत के एक ऐसे तबके को प्रतिनिधित्व करती है और अब पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करेगी, जहां एक विश्व भर में ये संदेश जाना जरूरी है कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक सही मायने में लोकतांत्रिक, आप पड़ोसी मुल्कों में देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके तुलना में आज भी वो स्थायित्व, वो स्थिरता लोकतांत्रिक जगत में जो हमारा है, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है इस देश का उच्चतम पद पर जो है पहुंच सकता है, ये एक संदेश वैश्विक स्तर पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और समय के जी सुरेश जी, इस समय यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, वो कुछ कह रहे हैं, आइए अनुकरणीय है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है को अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनने का, आपको लगता है कि पक्ष के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि इस बीच पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले सिमरनजीत सिंह मान ने अब से कुछ देर पहले लोकसभा सदस्यता की शपथ ली है। आइए देखते हैं। मैं सिमरनजीत सिंह मान जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निडरता रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते इस अहुदे दे मैं संभालन वाला हाँ, उसके कर्तव्य नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। Thank you very much for swearing me in. बैठ आप बैठे हैं। अग्निहोत्री जी, हमने देखा अभी लोकसभा सीट संगरूर की, वहां उपचुनाव में जीत हासिल की है सिमरनजीत सिंह मान ने और उन्होंने शपथ ली है। और बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, उसी दिन कोई सांसद शपथ ले रहा हो। टेक्निकली क्या है, अब सिमरनजीत सिंह मान भी वोट दे पाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए शायद वो शपथ ले भी रहे हैं कि जो शपथ लेने के पहले वो कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए शपथ लेने के बाद कर सकते हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लिस्ट निकालते हैं जो, उसमें उस वक्त तक जब लिस्ट बन रही, जब तक वो लोग हैं, जितने लोग उस टाइम तक हैं सदस्य स्टेट असेंबली के, वही वोट दे सकते हैं। और ये भी कानून में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई पद वेकेंट है
तो उससे कोई इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जरूरी नहीं कि जितने वो हैं मेंबर्स स्टेट असेंबली के सभी वोट डालें। कभी कभी तो पूरे स्टेट में असेंबली नहीं, जैसे इस बार J&K में कोई असेंबली ही नहीं है। Absolutely, and perhaps that's why the value of vote has also reduced, and that's an important aspect also this time around. Interestingly, what Mr. Agnihotri was earlier also pointed out was it's very rare that, along with the presidential elections, the elections to the Rajya Sabha also take place in the same year, and it happens usually, sir, when the elections happen every even year, if I'm not wrong. Yes. Once in 10 years, you can say more or less. Absolutely. So that's a unique and interesting feature of the presidential election this time around as well. You can see on your screens the Chief Minister of Gujarat casting his vote to elect the President of India. So simultaneous voting procedure going on in the Parliament as well as state assemblies across the country. Elected members of the state assemblies as well as the Parliament, both houses of Parliament, take part in this important exercise to elect the President of the country every 5 years. तमाम राज्यों की विधानसभा से भी तस्वीरें हैं और लगातार ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। कतारें अभी भी लंबी हैं, एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार में हमें बिल्कुल भी थकते चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सब आपस में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चर्चा भी कर रहे हैं, कतार में लगातार लगे भी हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम सांसद और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से भी हमारे पास लगातार तस्वीरें आ रही हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं, लेकिन जो कतार है वो सुबह 10 बजे के पहले ही लगनी शुरू हो गई है। और जैसा हम आम चुनाव में भी टीना देखते हैं कि आम लोगों की भीड़ पहले से ही लगना शुरू हो जाती है और ऐसे में सांसदों का जोश भी है जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वो भी कम हम नहीं देख रहे हैं। Absolutely, and very interestingly, what you're seeing on your screens, there are huge, lines of the legislators both inside Parliament as well as the state assemblies. So, for us who queue up every 5 years to elect our local MLAs as well as members of Parliament, and similar scenes now being witnessed to elect the president, because it's an indirect election where the common people do not vote. We elect representatives who in turn elect the president of the country. But what we are seeing today, the kind of procedure, how it came into being, what is the kind of debate and discussion that took place way back when such procedures were formulated. So let me bring in Mr. Agnihotri to understand. And I recall, Mr. Agnihotri, I read somewhere Mr. Jawaharlal Nehru had said that the President of India is the head who neither resigns nor governs. So obviously that was like an extremist view, but tell us about the kind of discussions, the debates that took place in the Constituent Assembly. What were the views of the father of the Constitution, Mr. Ambedkar, after which we have this procedure to elect the President of India? You see, two things have to be remembered. One is that perhaps because India was being ruled by the Britishers, we somehow got adjusted to or used to what is called the Westminster model of Parliament, where you have a Parliament and you have separation of powers among 3 wings of the government, and therefore ab initio it was decided that we will have a parliamentary system of parliamentary democracy. But in the Constituent Assembly there was a debate that President should also be elected by the people. And there were a lot of people who wanted that kind of provision in the Constitution. But then ultimately the Constituent Assembly came to the conclusion that if President is elected directly and the Parliament is also elected directly, then there will be conflict. And we will not really have a constitutional or parliamentary democracy, but we may have a presidential system like the US or some other countries. So that is where they said that since we want a parliamentary system, we should not have directly elected president. Absolutely. And that is when this new system was introduced. And time and again there have been controversies related to the procedure itself, also with the powers of the president. But talking about the procedure, and when we talk about the value of the vote, sir, it's decided on the basis of the population of the state. That has also been an area of concern, because those states with lesser population argue that why should our vote value be lesser than those that are heavily populated? Well, that matter was actually, you can say, could have been clubbed with or settled when equal representation in Rajya Sabha was not given to all the states. It is on the basis of population. So somehow
initially itself the Constituent Assembly or our constitution makers, they felt that in India, representation on the basis of population should govern all institutions. And that is where this thing has been given. And so there is a weightage given to the population, because you have very small states, very big state, you can't have equal representation, unlike US, where when it comes to electing the Senate, there are equal number of senators, 2 senators from every state. So that is not the system we have followed. We have given weightage to population in deciding the representation to different states. And when you come to this value of votes, especially for the members of parliament, it has gone up as high as 723, because as this population is still 1971 population on the basis of which the calculations are done, and it will continue till 2026. The same value will continue. When on the basis of the 2021 census, as and when it is held, perhaps there will be change in the weight of the votes of various state assembly members as well as the parliamentarians. So highest it has gone up to 723. It has at the low of 700, but in between for several years, since almost 1997 onwards or whatever, it was 708 till the last election. So you can see on your TV screens the elected members of parliament there in line to actually cast their votes. The bonhomie between members cutting across various party lines. This is one day when the monsoon session of parliament is beginning, and before that the members are there present at the venue to exercise their franchise to elect now the president of the country. Preeti. और जाहिर तौर पर आज हमारे लोकतंत्र के लिए, देश की संविधान के लिए, संवैधानिक पद के लिए सबसे बड़ा दिन, जब देश में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए फिलहाल तस्वीरों में हमें तमाम सांसद कतार में लगे नजर आ रहे हैं और राज्यों की विधानसभाओं से भी लगातार तस्वीरें हम तक आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कुमार राकेश, जब हम राष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करें तो जाहिर तौर पर कहा यही जाता है और हर बार हम ये बात करते हैं कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चुनाव हो और एक तरह से मतदान की नौबत ना आए और किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बने। लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं अब ये आरोप भी लगते रहे हैं कि जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन ना होकर इलेक्शन से जुड़ा एक इलेक्शन हो गया है। तो राजनीतिक संकेत किस तरह के हैं चुनाव से जुड़े हुए? सर्वसम्मति की बात है, डेमोक्रेसी में अगर अलग अलग पार्टीज का अपना आइडिया है, अगर वो चुनाव कंटेस्ट करना चाहती हैं तो इसको हम डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि अगर आप इंडिया के हिस्टोरिकल जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, आई थिंक 77 में एक बार, 78 में नीलम संजीव रेड्डी जी का जो चुनाव हुआ था वो एक बार यूनानिमस हुआ था। उसके बाद जब भी चुनाव हुए हैं उसमें कोई न कोई कंटेस्ट हुआ ही है। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो एनडीए ने मुर्मू जी को दिया है, तो अपोजिशन जिसकी एक मजबूरी थी बीजेपी से लड़ाई लड़ना, उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया और कहीं न कहीं जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे तो एक वो उनका मैसेज भी गया कि जब मुर्मू जी को एनडीए ने बाद में, एक ट्राइबल लेडी थी, बाद में एनडीए ने उनको प्रोजेक्ट किया, तो उसके बाद आपने देखा कि अपोजिशन कैंप में भी कुछ नेता थे जैसे ममता बनर्जी, उन्होंने बोला भी कि अगर मुर्मू जी के नाम पर पहले बात होती तो एक कंसेंसस बन सकता था। तो लेकिन एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी में किसी भी इलेक्शन को हमें इस तरीके से देखना भी नहीं चाहिए कि गलत है। कंसेंसस इज डिजायरेबल बट इट इज नॉट समथिंग दैट हैज टू हैपन और डज टू नेसेसरली हैपन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है, इसके पहले भी जितने इलेक्शन हुए हैं हमेशा कहीं न कहीं अपोजिशन ने भी कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है, एक दो अपवादों को छोड़ करके। इनफैक्ट जब पहले जो हमारे दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, तो उस समय भी बीजेपी ने भी उनको सपोर्ट किया था, लेकिन उस समय शिवसेना ने टीएन शेषन को प्रोजेक्ट किया था।
तो डेमोक्रेसी इज ए बैटल ऑफ आइडियाज. हर पार्टी का एक अपना व्यू होता है कि राष्ट्रपति भवन में कैसे पर्सनालिटी को होना चाहिए, उनको क्या सिंबलाइज करना चाहिए, और आई थिंक एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट अप देयर कैंडिडेट. Absolutely, but when it's about social messaging at large, Mr. Suresh, and the kind of messaging that the BJP has been wanting to give ever since it came to power back in 2014, that cutting across ideological barriers, reaching to every household through its various schemes, and now, with decisions like these, actually bringing in those who've been left out, who haven't been duly represented in our democratic institutions. So this is one classic example where a lot of analysts have, expressed their view that there should have been consensus because it is for the larger good. But the kind of political discourse that we've been seeing of late, that kind of consensus unfortunately could not happen. So that's a missed opportunity for the joint opposition.